criminal case registered against him under the PCF. Not that was done on 11/2/2019. Pursuant to that, my lord, a writ petition was filed, and which came to be allowed on 19/9/2023, holding that the order has been passed by incompetent authority, with the direction that they may pass a fresh order within 10 days. So they passed a fresh order, my lord, on 27/9/2023, but kept me under suspension from the initial date on which I was earlier suspended. That was my objection, that how once an authority was not competent, how that order can be ratified, you will have to revoke that. You may pass a fresh order of suspension. Even that 19/9/23 order which was passed by this court, I preferred a review petition, and the part that my consideration for suspension cannot, for revoking the suspension can be done on the ground that the delay is not on my part, it is on the part of the prosecuting agency. And that was also modified to the extent, and they are ready to that. वो ठीक है. But this order, ये बताइएगा, ये लास्ट में पढ़िएगा आप इसका. 27/23 का order. अतः माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका के में दिनांक को पारित निर्णय की परिपालन में श्री उपेंद्र सिंह निलंबित शाखा प्रबंधक के विरुद्ध जारी बैंक आदेश क्रमांक इतने की सहमति पुष्टि की जाती है का निर्णय पारित किया गया. How can that order passed by a incompetent authority be ratified? आप तो कॉन्स्टिट्यूशनल वकील हैं भाई, DB1 में रहते हैं. जी. हाँ, बताइएगा. नहीं, एक तो इनका ग्रीवांस, एक तो उनको भूल जाइए. Forget about his client and I am asking you a direct question. जी sir. How an order passed by incompetent authority be ratified from a back date? My lord, that is as per the mandate of this honorable court contained in order annexure T. Can this court direct you to regularize the illegal order? Where is that order? पढ़िएगा. Where is that order? That is page number 11 annexure. And अगर आप डिफेंड नहीं कर पाए तो कॉस्ट लगाऊंगा मैं आपके ऊपर. जी sir. I'll not permit this. I know that how these cooperative banks are functioning. My lord. There's complete chaos, complete anarchy, full of corruption. My lord. You cannot do it. Either you withdraw this order with liberty to pass fresh order, regularizing that period of suspension, which was passed by an incompetent authority. You may pass a fresh order. That is your prerogative. I'll not come in between. You may pass a fresh order. They have filed their reply. Forget about it. इतना सा क्रक्स है, बस रुक जाइए. इससे ज्यादा आपको मिलेगा नहीं. मतलब जो रिव्यू हुआ था उस पे भी उन्होंने कंसीडर कर लिया कि हम उस पे कंसीडर कर रहे हैं, तो उस पे दे में पास एन ऑर्डर एंड दिस ऑर्डर बी क्वेश्चन बिकॉज़ दिस इज विदाउट. नहीं. My lord, this case has a checkered history. We are not concerned with the history. जी. Your conduct is more checkered. My lord. इसमें लिबर्टी हमको दी गई थी. My lord, लिबर्टी आपको हम भी दे देते. लिखिएगा श्री with the consent of Shri Brahmdas Singh, impugned order dated 27/9/2023 is 23 being illegal in as much as an illegal order could not have been regularized from a back date, having been passed by an incompetent authority, is hereby quashed with liberty in favor of the bank to pass a proper order by a competent authority in this behalf within 15 days of receipt of certified consent may copy not of be the recorded because sorry. My lord, I apologize. Then I'll impose cost. ठीक है, कंसेंट हटा देते हैं. कॉस्ट ये इस माननीय न्यायालय का आदेश था, उसके अनुसार हमने काम किया. नहीं, वो हम लिखाइए. माननीय न्यायालय ने क्या कहा कि इलीगल ऑर्डर को रेगुलाइज कर दीजिए. ये एक्चुअली रूटीन सस्पेंशन रहता है. जहां चार्जशीट फाइल हुई, ऐसा नहीं है. नहीं, इसमें दोनों पक्षों ने कोई रिट अपील नहीं करी इसके खिलाफ में. मत खरीदने दीजिए ना, क्योंकि आपकी यही आदत बहुत खराब है. आप कानून से हटके और कोर्ट को सिर्फ घुमाने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं. ये पेज नंबर 13 में पढ़ देता हूँ सर थोड़ा सा. पेज नंबर 13 क्या है? जो जिस आदेश के तारतम्य में ये आदेश पारित किया गया है, जिसको चुनौती दी गई. ये इसको शुरू करता हूँ पेज नंबर 12 पे डाउन बिलो लास्ट लाइन. Indisputably, there is no board of directors. The body is under supersession. Administrator is appointed, and under such a circumstance, staff of Samiti can exercise the power of suspension. Apparently, that has not been done. Order of suspension, therefore, is without jurisdiction. It is accordingly set aside. However, respondents are directed to pass a fresh order in accordance with Seva Niyam. अब बताइए, जब an order which has been termed illegal by the court and that has been set aside, how can you say that that order is ratified from a back date? अब आइए P3 पे वापस आइएगा. सर थोड़ा सा पूरा पढ़ लें. नहीं, पूरा पढ़ेंगे. एक मिनट, P3 पे आइएगा. आगे ही हमारा जो ग्रीवांस था वो आगे रिड्रेस हो गया, इसलिए हमने इसको चैलेंज नहीं किया. क्या कहा? आगे लिखा है, the order be passed by the competent authority
Because petitioner is facing criminal prosecution under provision of Prevention of Corruption Act 1988, and as per requirement of law, invariably he should be placed under suspension. Therefore, it is expected from the authority to take appropriate action and pass order within a period of 10 days from the date of receipt of copy of this order. Was he under custody? नहीं, एक सेकंड. Where is the provision in the bank regulations to place him? ये भी उन्होंने भी अंदाज से लिख दिया. रूल 992A तो ये कहता है कि जब उसको 48 घंटे के लिए कस्टडी में लिया जाता है, आपके यहाँ कौन सा नियम लागू होता है? ये बैंक के सर्विस रूल्स है अंडर सेक्शन 55 ऑफ द कॉर्पोरेट राइट. सर्विस रूल्स दिखाइए ना. हाँ, दैट इज माय लॉर्ड, मैं काइंडली अप्रिशिएट. ये क्या पहले डब्ल्यूपी अलाउ हो गया था? तो सवाल देखिए, बहुत गलत आदत है आपकी. आपसे सवाल जो पूछ रहे हैं, बैंक का सर्विस रूल बताइए जिसके मुताबिक इनको सस्पेंशन में रखा गया. माय लॉर्ड, आई विल प्लेस इट ऑन रिकॉर्ड माय लॉर्ड. द रेलेवेंट दिखाइए ना, मुझे दिखाइए ना. मैं इसको टाइम नहीं दूंगा. सस्पेंशन ऑर्डर इज सस्पेंशन ऑर्डर तो ठीक है, आपसे जो पूछ रहे हैं वो बताइए. जी सर, बैंक का नियम बताइए. मैं दे रहा हूँ. This is not being filed by the petitioner. I'll place it on record. मैं इसको पुराने रिकॉर्ड से प्रस्तुत करता हूँ. दीजिए ना. ये मैंने अपने जवाब के साथ प्रस्तुत किया था. हाँ ठीक है, दिखा दीजिए प्लीज. डब्ल्यूपी का जो इसके पहले जो डब्ल्यूपी फाइल हुआ था, दिस इज द रेलेवेंट रूल माय लॉर्ड. 51.1 पढ़िएगा. ये निलंबन, सेवा मुक्ति तथा छटनी इज द हेडिंग. यदि कोई सेवायुक्त किसी नैतिक अधमता के आपराधिक अभियोग में गिरफ्तार किया जाता है एवं उसे 48 घंटे से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जाता है या उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में बैंक की अनुमति से चालान प्रस्तुत किया जाता है, तो दंड अधिरोपित करने के लिए सक्षम अधिकारी गिरफ्तारी की तारीख से उसे उसके निलंबन का तथा निलंबन की कालावधि के दौरान इन नियमों के अधीन निलंबन स्वयं. तो इसमें क्या लिखा है? गिरफ्तारी की तारीख से. नाउ शो मी द डेट, गिव मी द डेट ऑफ हिज अरेस्ट. माय लॉर्ड, फिर से पढ़ लीजिए चाहे तो. जी जी. When was he taken into custody? My lord. यही दिक्कत होती है जब कोर्ट्स अंदाज से ऑर्डर पास करने लगते हैं, बिगर लुकिंग इनटू द स्टैट्यूट बुक और द रूल्स. और वही काम आपने किया. My lord. सर, इसमें लिखा है कि हेडिंग मत पढ़िए, हेडिंग पढ़ ली मैंने. अंदर का कंटेंट हम हेड नोट पढ़ के निर्णय नहीं करते हैं. जी जी जी. उसके विरुद्ध किसी न्यायालय या उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में बैंक की अनुमति से चालान प्रस्तुत किया जाता है. आगे पर दिखाई दीजिएगा. चालान किस तारीख को पेश हुआ था आपकी अनुमति से? तो ये लिखा है इसमें इम्प्यूग्ड ऑर्डर P1 कि 28/12/18 को माननीय न्यायालय स्वयं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया, पेज 10. 28/12/18 सर. जी. तो आप रिट्रोस्पेक्टिव तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कर सकती थी. इसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? इसी ग्राउंड पे तो केस अलाउ हुआ था, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने नहीं किया. अब ऑर्डर रिट्रोस्पेक्टिव थोड़ा ना होगा, ऑर्डर प्रोस्पेक्टिव होगा. केस इज स्टिल गोइंग ऑन. यू मे प्लेस हिम अंडर सस्पेंशन. आई हैव नो प्रॉब्लम, बट दैट ऑर्डर विल बी प्रोस्पेक्टिव. उसी बात के लिए कि because the now challan has been नहीं, they may review it. That's a different thing. one submission. Yes, they may review it. ये लिख दिया गया था, तो मैंने रिव्यू फाइल करके ये बताया था कोर्ट को कि देयर इज अ प्रोविजन कि 52 मुझे 51 पढ़ रहे हैं, तो सब्सिक्वेंट वही मैंने फाइल करके रिव्यू फाइल 52. यस बट इन 52 देयर इज अ प्रोविजन कि अगर 1 साल से अधिक समय हो जाता है तो वही वो क्लियर कर देते हैं. हम इसको ऐसा पूरा बदल दिया. वो ऑर्डर भी लगाया मैंने P5. ठीक है, रुक जाइए. Petitioner's contention is that coordinate bench of this court
in WP 7827 of 2019 passed orders on 19 September 2023, whereby it had set aside the earlier order of suspension dated 11/2/2019 on account of registration of a criminal case number 2/2014, but that order was set aside on the ground of having been made by the incompetent authority. Full stop. Coordinate bench observed that order of suspension could have been passed by staff up samiti, but since the earlier order of suspension as contained in annexure P1 was passed by the chief executive officer and not by the chief executive officer of the bank with the approval of the collector and administrator and not the staff up samiti, that order was set aside. Full stop. Our liberty was reserved in favor of the bank to pass a fresh order. Full stop. In review, which was filed by the petitioner, order was modified to the extent that if petitioner makes a representation for review of the order, then in terms of the provisions contained in Service Regulation 52, that application for review too will be considered. Next para. Now, while impugned order annexure P6, sorry P6, P3, the illegal order has been ratified by the chief executive officer without understanding the meaning and import of the orders passed by the coordinate bench. Next paragraph. Shri Brahmadas Singh is at loss to explain that how an illegal order be ratified. Full stop. Next paragraph. In the opinion of the court, only two courses were open to the respondents. One, to review the order in terms of Service Regulation 52, and if they would have found that the order is not reviewable or there are no grounds to review the same, they could have passed a fresh order of suspension in favor against the petitioner. Therefore, impugned order annexure P3 ratifying the illegal order already set aside by the coordinate bench of this court cannot be given a seal of approval. Accordingly, impugned order dated 27/9/2023 is hereby quashed. Next para. Respondents will be at liberty to examine the validity of placing the petitioner under suspension, keeping in view the service jurisprudence and also the regulations 52, Service Regulation 52 in mind. And if they come to a conclusion that placing the petitioner under suspension is necessary, then they may pass a fresh order which will be prospective in nature and not retrospective. Accordingly, petition is disposed of. Number 30.